Secretary General, International Buddhist Confederation, Saratse, Kensur, Rinpoche, Jongchung, Choyodен, monks and delegates from Asian countries, distinguished guests, ladies and gentlemen. Let the flowers offered to the Buddha here spread the fragrance of our goodwill in all directions. Let the lamp we have lit here spread the light of wisdom. I am delighted to be here today, and I see before me a cross-section of the modern-day Sangha. Many of you have come here from far-away places. You speak different languages. You are wearing robes of different colors and shades, but all of you are united in your striving for Dhamma, walking on the paths shown by the Buddha. It is my honor to welcome you all to India and to this summit. The International Buddhist Confederation, or IBC in short, must be commended for organizing this two-way conference. The themes chosen for the summit, the role of Buddha Dhamma in strengthening Asia, is age after age, it is timely. Over these 2 days, you monks, scholars, and practitioners will engage in dialogues and discussions about the Buddha Dhamma and its role in contemporary society. India is the blessed land of Dharma. Here, in every age, there have been great masters and mystics, seers and seekers who have shown humankind a way to find peace inside and harmony outside. The Buddha holds a unique place among these pathfinders. The enlightenment of Siddhartha Gautama under the Bodhi tree in Buddha Gaya is an event unparalleled in history. He not only attended incomparably rich insights into the working of the human mind, he also chose to share them with all people in the spirit of Bahujana Sukhayo, Bahujana Hitayo Cho, for the welfare of the masses. For 45 years after his enlightenment, he went from place to place preaching the Dharma. He took his message to a variety of audiences, kings and artisans, men and women, monks and lay people. To spiritually involved people, he explained the causes and conditions that shape human experience. To ordinary people, he taught how to lead a moral life. What is Buddha Dhamma? Ashok, the great emperor who shunned violence after embracing Buddhism, had this definition of it carved on a pillar, and I quote, Dhamma is good. And what is Dhamma? It is having few faults and many good deeds, mercy, charity, truthfulness, and purity. Unquote. Over the centuries, it was only natural that different practitioners would find different meanings in the Buddha's discourses, and thus there arose a variety of sects. In broad classifications, today we have Theravada, Mahayana, Vajrayana traditions, with many schools and sects within each of them. Moreover, such flowers of the Buddha Dharma proceeded in many directions over different periods of history. In one wave, it was transmitted to Sri Lanka, Myanmar, Cambodia, Indonesia, and other places in Southeast India. Another wave took the words of wisdom to Tibet and Nepal, and then to China,
Mongolia, Japan, Korea, Vietnam, and elsewhere. While their interpretation of the Tathagata's message differ widely, what must be noted is that there is no contradiction among them. The Buddha's first discourse at Sarnath near Varanasi remains fundamental, and layers of further and further refined understanding of it are added to it. This spread of Dhamma over all expanding geographical area created a community, a larger Sangha. In essence, India, the land of the Buddha's enlightenment, is at its center. But what is said about God is also true about this larger Buddhist Sangha. That its center is in everywhere and circumference nowhere. This is all the more true because apart from Southern Buddhism and Northern Buddhism, it has also been spreading in the only remaining direction in the last 2 centuries, and it has come to known as Western Buddhism. Dear friends, when the world today is facing an existential crisis on many fronts, not only strife but also the climate crisis, your large community has much to offer to humankind. The various schools of Buddhism show the world how to counter narrow sectarianism. Their central message remains focused on peace and non-violence. If one word can capture the Buddha Dhamma, it has to be Karuna, or passion, which is what the world needs today. As the theme of the summit has captured it well, we need to discuss the role of Buddha Dhamma in strengthening Asia. Indeed, we need to expand the discussion to see how Buddha Dharma can bring peace, real peace, to Asia and to the world, a peace free from not only physical violence, but also from all forms of greed and hatred. The two mental forces at the root of all our miseries, according to the Buddha. India has and will continue to do all it can to partner with you in this endeavor, just as you too have contributed to it. Here I am thinking of the preservation of the Buddha's teachings and how it has been a great collective endeavor for all of us. His precious words would have been lost after his Mahaparinirvana, but it was an assembly of monks held in Rajgir who preserved his message for posterity. Eventually, his followers collected his discourses in the Tipitaka. It was first set down in the verbal form, transmitted from generation to generation, and it too might have been lost. Monks in Sri Lanka set it down in writing on palm leaves. Later, when the great library of Nalanda was destroyed, many texts could be recovered from the Tibetan and Chinese translations. This is what makes Buddhist literature a truly shared heritage for us. You will be glad to learn that we have continued such efforts in this century too. It was only last month that the Government of India granted the status of classical language to Pali and Prakrit, among other languages. While Sanskrit has already been included in that category, Pali and Prakrit will now receive financial support, which will surely contribute significantly to the preservation of their literacy and treasures and to their revitalization. This summit, I am confident, will go a long way in strengthening our cooperation based on our shared heritage of the Buddha's teachings.
I am sure you will have a fruitful dialogue over the next 2 days. Let me end by extending the invitation to those of you who have come from abroad to visit the National Museum here and also the places in the Buddhist circuit for a view of the rich Buddhist heritage. May Dhamma bring joy and happiness to all. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हम आपको बात कर रहे हैं और दिखाने वाले हैं एशियाई बौद्ध सम्मेलन जो न्यू दिल्ली के अंदर संस्कृति मंत्रालय द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें पूरे विश्व से, पूरे वर्ल्ड से बौद्ध भिक्षु बनते और तहसील जो लोग हैं, वैज्ञानिक जो लोग हैं, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। और यहाँ जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उन्होंने एक स्पीच दिया, और जो बहुत ही जबरदस्त स्पीच है, आप लोगों को सुनना चाहिए। उसके अंश कुछ हिंदी में मैं आपको डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूं। तथागत बुद्ध को, भगवान बुद्ध को वैज्ञानिक और तर्कशील कहा, और उनके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे को भी उन्होंने यहाँ कोट किया, लोगों को बताया कि किस तरह से जो बुद्धिज्म है वो वैज्ञानिक तरीके से पूरे विश्व के अंदर एक शांति का माहौल, एक तर्कशील माहौल जो स्थापित करने की कोशिश है, उसको बहुत अच्छी बखूबी उन्होंने रखा है इसके अंदर। और साथियों, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध एक ऐसी हैसियत हुए हैं, ऐसी शख्सियत हुए हैं भारत के अंदर, जिन्होंने ये स्थापित किया कि जो पूजा है, पाखंड है, तपस्या है, अंधविश्वास है, वो कहीं पर भी उसका कोई वजूद नहीं है। वो एक तरीके से जबरदस्ती जैसे बहुजन लोगों को, वंचित गरीब महिलाओं को उसमें जकड़े रहने के लिए उसको यहाँ पर अंधविश्वास को, ऐसी चीजों को स्थापित किया गया, जिसको तोड़ने का काम तथागत बुद्ध ने किया। और वो कैसे किया वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब तथागत बुद्ध भी लोगों की पीड़ा और दुख देख करके राजमहल को, अपने राजाशाही जिंदगी को छोड़ करके जंगलों में चले गए, वो भी कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित थे। जो लोग पहले तपस्वी बनते थे या पूजा या भगवान को स्थापित करते थे, अंधविश्वास को स्थापित करते थे, तो वो भी एक तपस्या करने के लिए एक जंगल में एक पेड़ के नीचे जब बैठ गए, और जब काफी दिन उस पर बैठे रहे कि मैं भी एक दिन एक साधु और बाबा बन जाऊंगा, लोग मुझे भी नमन करेंगे, लेकिन वहां पर हुआ उसका उल्टा। जब वो वहां मरणासन स्थिति में चले गए, मरने की स्थिति उनकी आ गई भूखे प्यासे रह करके, तो वहां से जो एक महिला जो अपने किसान के लिए खाना लेकर के जा रही थी, जिसमें खीर भी थी और रोटी सब्जियां भी थी, तो जब उस महिला ने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति यहाँ पर मरने जैसी स्थिति में बैठा हुआ है, गिरने की स्थिति में है, तो उसने बड़े विनम्र भाव से उनको रिक्वेस्ट किया, यही साधु बाबा समझ करके, कि आप तो मरने वाले हैं, आपने कुछ इतने दिन से खाया पिया नहीं है, तो आप थोड़ा सा खाना उसने ऑफर किया। और खाने में देखिए वो महिला भी कितना सशक्त थी अपने दिमाग से, कि उसने पहले उनको सिर्फ खीर परोसा, ना कि रोटी सब्जी परोसा, क्योंकि खीर परोसने का एक कारण खास था, क्योंकि खीर जो है या चावल जो है वो लाइट हल्का खाना माना जाता है। अगर उसे रोटी सब्जी देती तो वो तथागत बुद्ध को शायद पचता नहीं, इसलिए उन्होंने खीर के रूप में उनको दिया। जब तथागत बुद्ध ने उस खीर को खाया, तो जहां वो मरणासन स्थिति में थे, बिल्कुल हालत एकदम वो हो गई थी खराब, तो जब उन्होंने खीर खाई तो तब उनको एहसास हुआ कि ये जो ढोंगी अब तक तपस्या के नाम पे हमारे देश के लोगों को, गरीब लोगों को, दुखी लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, तो अगर मैं ये नहीं खाता तो मैं आज ये जान मुझ में नहीं पड़ती, मैं जिंदा भी नहीं रह पाता, तो मैं कल्याण क्या करता लोगों का। तो उन्होंने वहां से इसको साबित किया तर्कशील
और वैज्ञानिक तौर पर देख करके कि तब उन्होंने ये साबित किया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं ईश्वर, भगवान या पाखंड पूजा इससे कुछ होने वाला नहीं है, और ये इस नाम की कोई दुनिया के अंदर ऐसी चीज नहीं है जिससे कि कोई संसार का या गरीब वंचित पीड़ितों का, महिलाओं का भला कर सके। तो इन सब बातों को भी राष्ट्रपति जी ने, मुर्मू जी ने भी रखा है उसके अंदर, और मुर्मू जी ने खास तौर से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो तथागत बुद्ध का कोट था वो दिया। और दूसरी बात साथियों, अगर हम आज के भारत में बुद्ध की बात करें तो जो बुद्ध के अनुयायी है बाद में भिक्खु के रूप में, भंते के रूप में, उनका मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोगों ने कत्लेआम करके जो उनको खत्म किया, उसको दोबारा जिंदा करने का काम अगर इस भारत में किया है तो आज के दौर में बाबा साहब अम्बेडकर ने किया 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के। ऐसे ही लालच बाबा साहब अम्बेडकर को भी दिए गए थे। जैसे जितने भी धर्म हमारे भारत में हैं, सबने बाबा साहब को लालच दिया कि आप हमारे धर्म में आ जाइए तो हम आपको ये सुविधाएं देंगे या इतना पैसा देंगे, मतलब हर तरह का प्रलोभन, लालच बाबा साहब अम्बेडकर को दिया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे धर्मों को पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष पे बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचे कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा रास्ता है जो इस भारत के लोगों को, सभी लोगों को, खासतौर से वंचित बहुजन महिलाओं को उस अंधभक्ति से, उस पाखंड से, उस अंधविश्वास से निकाल सकता है। तो एक सिर्फ बौद्ध धर्म ही निकाल सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का है, बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद उसमें कोई बहुत बड़ी संख्या की बढ़ोतरी मुझे नजर नहीं आती है। और हाँ, ये गर्व से कह सकते हैं कि मैं भी अगर बाबा साहब को नहीं पढ़ता तो शायद मैं बुद्धिस्ट नहीं बनता। उसमें एक इजाफा हो रहा है, लोग उस रास्ते पे चलने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत लोग लगे हुए हैं। तो साथियों, ये जो राष्ट्रपति जी का जो भाषण है वो पूरा इंग्लिश में है, इसलिए मैंने उसको आपके सामने थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज को लगातार देखते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम इस तरह की चीजों को, इस तरह के विचारों को आप तक पहुंचाते रहें, कोशिश करते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।